The main and the most important thing about the role play is that we come here with a real life communication, right? We talk about the role play, वहाँ पे क्या होता है real life communication की जब हम बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि अब normally when you live in the city like Bilaspur, यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? But when you go to Bangalore, for the God's sake, I really want that one time you must go to Bangalore, okay? Yes. There even a auto driver will also talk in English. The vegetable seller will also talk in English. Okay, when you go to the big cities, even Delhi, sometime when you go to the mall, it's important to have the general conversation. And even if you know English, you are not confident enough to talk with other person, it won't give you any benefit at all, right? You can go without real life communication. Speaking is different thing, but until and unless you are not able to say what do you want to say with the normal people, with the normal communication, that is not what our life. And second, practical use of tenses. Reading tenses, what is the main reason we are not able to speak English? Well, the main reason is this one. We don't learn the practical use of tenses. Not even tenses, we don't learn the practical use of anything. Okay, we study science, physics. Do we learn the practical use of that? No, not at all. We just just go for that we studied science and there is no practical use that we are learning there. Right? Second, we study mathematics. Practical use we have a little, but when we talk about algebra, a lot of people ask what is the the work of trigonometry. Why do we have that? But in reality, there are practical use, but we didn't do that. That's a different aspect, right? When we talk about tenses, we study tenses, rules. Every teacher said you cram the rules, remember the rules. It is very important. It will come in exam. But until and unless you are not practicing that in a practical manner, it will not give you any benefit at all. Simple, right? पहला चीज था fear of water. So when we talk about fear of water, इसको क्या बोलते हैं हम? Hydrophobia. It's simple. Fear of medicine. Pharmaphobia. Fear of marriage. Yeah, gamophobia. Okay, next, fear of darkness. Nightophobia. Night से याद रख सकते हो, of the dark. And fear of animals. Animal goes with the zoo. Study of animal is zoology. Fear of animal, zoophobia. Okay, fear of people, demophobia. Okay. And fear of flying, aerophobia. You can connect it with aeroplane. Okay, means in air. Okay, fear of being alone. Monophobia, we have done it already. Next, a fear of blood. Fear of dog. Cynophobia. Fear of women. That's, what do we pronounce that? Gyno. For अगर आप शॉप पे सबसे पहले जाते हो, so what is the first thing that we say mainly? What do you want? नहीं, कोई और. How may I help you? वो कितने सदियों पुराना हो गया, वही चीजें बोले जा रहे हो. Would you mind if I help? Need me to assist you? Thing I can do to make it convenient for you. Spelling? Convenient. E है ये, IE. Okay. How may I help you? यहाँ पे कैसे आंसर कर सकते हो? Yes, I'm looking for this thing. Simple. इन सभी के लिए सेम आंसर हो सकता है, लेकिन हाँ अलग अलग भी बोल सकते हो. Yes, I'm looking for this thing. Looking for क्या होता है? ढूंढना. Looking for का मतलब होता है ढूंढना. ये फ्रेजल वर्ब है. Assist. अगर हाँ करनी है और हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलना होता है, चाहे हाँ चाहे ना. हाँ करनी है तब तो होगा यस आई नीड वन असिस्टेंट. आई नीड अ असिस्टेंट बिकॉज, अब रीज़न कुछ भी, आई एम न्यू हियर और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दिस मॉल, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन द मॉल और यस आई नीड अ हेल्प बिकॉज आई एम न्यू हियर. ओके, डू यू माइंड इफ आई हेल्प? अब अगर मना करना ऊपर वाले को तो क्या होगा? अगर किसी ने बोला हाउ मे आई असिस्ट यू तो क्या होगा? नो, आई डोंट वांट असिस्टेंस. असिस्टेंस और असिस्टेंट दोनों ठीक है. आई डोंट माइंड इफ आई हेल्प. या सो यू कैन से नो आई डोंट माइंड. इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब क्या है कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. माइंड करना क्या होता है? चाहिए. वुड यू माइंड का मतलब होता है कि क्या आप माइंड करोगे? माइंड करने का मतलब क्या होता है? क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं आपकी हेल्प करूं? नो आई डोंट माइंड मतलब कि नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा. यू कैन हेल्प. ठीक है, इट इज़ द राइट वे. अगर आप आई कैन डू टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू, तो इसका आंसर होता है यस आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग. ओके, ये कोई असिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ थोड़ा सा हेल्प के लिए अगर कोई आता है सेल्समैन तो बोलता है दैट यस आई एम लुकिंग फॉर
वाइट कलर शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर पोलो शर्ट, अब आ जाएगा कि आपने खरीदना क्या है, ठीक है। वो पॉइंट कुछ भी आप रख सकते हो, टीवी रख लो, मोबाइल रख लो स्टार्टिंग में फॉर द रियल कन्वीनियंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन की बात है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है शॉपकीपर, रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का मोबाइल फ़ोन चाहिए। सो व्हाट विल बी इन इंग्लिश, yes, which type of mobile phone do you want or what are your requirements, okay। और क्या बोला जा सकता है कि do you have a specific brand in your mind, कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड है आपके दिमाग में कि आपको उसका मोबाइल फ़ोन चाहिए, ओके। सो इन दैट सेंस सेकेंड क्वेश्चन, सो फॉर एग्जाम्पल आई आंसर्ड that yes, my requirements are that I want a good camera mobile phone, means I want a good camera in mobile phone and battery backup should be good and I also play sometime games, okay। So my processor should be good, okay। Now पहले बजट, पहले बजट तो पता होना चाहिए ना कितना बजट है, ठीक है। व्हाट्स योर बजट, ओके। और अप टू हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड ऑन अ मोबाइल फोन और व्हाट इज योर मैक्सिमम लिमिट, ओके। सो यू कैन से my maximum limit is और I can spend up to 30,000, 40, 50, 60 जितना भी रखना है रख सकते हो, ठीक है। which brand would you prefer, ओके। कौन सा ब्रांड आप प्रेफर करोगे। प्रेफर वर्ड होता है ना, वो अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू विच ब्रांड विल यू चूज। एक मैंने जो बोला था वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइल यू स्पीक, इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब वर्ड्स का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेफर और चूज बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और प्रेफर ही बोलना चाहिए जब 2-3 ऑप्शन हैं, राइट। अब देखो जैसे कि आपने चूज कर लिया कि हाँ जी कौन सा ब्रांड, सो ही विल से आई डोंट केयर अबाउट ब्रांड, आइदर ही कैन से आई डोंट केयर अबाउट ब्रांड, टेल मी द स्पेसिफिकेशन। अब एग्जैक्ट वर्ड है दैट इज स्पेसिफिकेशन। जब कौन सी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं चीज़ें, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इनकी, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन यू कैन यूज़ द वर्ड प्रॉपर वर्ड, ओके। उसके या वारंटी, दैट हाउ मच वारंटी एंड ऑल द थिंग्स इट इज़ बीन प्रोवाइडिंग, एंड सेकंड कलर, विच कलर डू यू वांट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज एंड ऑल दैट, कि स्टोरेज कितना है इसमें और वगैरह वगैरह कितना है, तो वो सारी चीज़ें। एंड फाइनली विल आस्क फॉर एनी डिस्काउंट ऑन द कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड और एनीथिंग एल्स, राइट। And or any discount you will give me as I'm your regular customer, okay। I will always buy the mobile from here।